अब हम आर्टिकल 15 के ऊपर कुछ केसेस करते हैं. We will do some cases upon Article 15. अब you should remember that Article 15 Clause 4, Article 15 Clause 4 was not there earlier. जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्समेंट में आया था उस टाइम से हमारे पास आर्टिकल 15 क्लॉज 4 नहीं था. इट वॉज एडेड लेटर ऑन. अब इसकी स्टोरी क्या है? वी हैव द केस ऑफ चंपकम दुरई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. जैसे मैंने डिस्कस किया है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 हमारे पास शुरू से नहीं था जब ये केस डिसाइड हुआ था. एट दैट टाइम वी डिड नॉट हैव आर्टिकल 15 क्लॉज 4 and there was no provision for reservation in educational institutions. उस टाइम पे सिर्फ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स का कॉन्सेप्ट था. अब इस केस में क्या हुआ था? द स्टेट ऑफ तमिलनाडु passed an act to provide reservation in public institutions. अब this act was held to be unconstitutional because there was no provision in Indian Constitution. There was no provision in Indian Constitution to provide reservation in educational institutions. लेकिन इस केस को ओवररूल करने के लिए we had first amendment of Indian Constitution, and इस amendment की वजह से Article 15 Clause 4 was added. Article 15 Clause 4 was added by First Amendment of Indian Constitution. And हमको एक चीज भी याद रखनी है कि Article 15 Clause 4 acted as an enabling clause for providing reservation in educational institutions. तो Article 15 Clause 4 के रिस्पेक्ट में आपको एक केस याद रखना है. अब इसके बाद हम कुछ और केसेस करते हैं with respect to Article 15. We have the cases of TMA Pi Foundation case and PA Inamdar case. ये दो सेपरेट केसेस हैं, and in these cases it was held that private institutes will also have to provide reservation. In these cases, it was held that there can be no reservation in private institutions. यानी सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ही रिजर्वेशन हो सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन नहीं हो सकता. अब इस केस को ओवररूल करने के लिए 93rd amendment was enacted. And Article 15 Clause 5 was added to the Indian Constitution. Okay. अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल. And 93rd amendment was held to be constitutional in the case of Pramati Educational Trust versus Union of India. ओके, तो हमको याद रखना है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन कैन बी प्रोवाइडेड. अब इसके बाद वी हैव द केस ऑफ अशोक ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट 27% reservation to the OBC category can be provided in the central institutions. यानी जो central institutions होते हैं यहाँ पे 27% reservation can be provided to the OBC category. तो ये केसेस हमको याद रखने हैं with respect to Article 15 of Indian Constitution.